ज्योतिका चौहान, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ स्किन केयर, मेकअप एंड हेयर स्टाइल। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टेप है स्किन केयर। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाली मुल्तानी मिट्टी, वो भी हर्ब टॉनिक की। यू कैन सी दैट। इसके सारे के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने यहाँ पे मंगवाए थे, यहाँ पे रोज पील ऑफ पाउडर, सैंडलवुड पाउडर एंड नीम पाउडर। एंड मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ आज मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। इससे अपना बनाने वाली हूँ फेस पैक, करने वाली हूँ स्किन केयर। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। मैंने अभी तक पैकेजिंग भी इसकी नहीं खोल करी है। मैं यहाँ पर करने वाली हूँ 1 टीस्पून के करीबन मुल्तानी मिट्टी। इतने के करीबन मेरा हो जाएगा। इसके अंदर कुछ भी ऐड करके अप्लाई नहीं करने वाली। इसके अंदर मैं नॉर्मल पानी ऐड करके अपने फेस पर अप्लाई करने वाली हूँ। आपको जो भी फेस पैक पसंद हो अपनी स्किन केयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है मुल्तानी मिट्टी, लगभग ये यूज़ करती हूँ। सो मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया है। इसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। सो हमारा ये फेस पैक बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बड़ा इजी है। अपने हाथों से लगाने में कंफर्टेबल हो तो हाथों से भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रश का यूज़ करके अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई करने वाली हूँ। मैंने अपने फेस पर अच्छी तरीके से फेस मास्क अप्लाई कर लिया है। इसको मैं पूरी तरीके से नहीं सुखाने वाली, क्योंकि पूरी तरीके से सुखाने से क्या होता है ना, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है। सो मैं नॉर्मली हल्का फुल्का सूखने पर इसको वॉश कर लूँगी। अगर आप पूरी तरीके से सुखाना चाहते हो तो सुखा भी सकते हो। सो वेट करते हुए मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ। फेस को अच्छे तरीके से वॉश करके आ जाती हूँ। यहीं पर वेट करें। सो मैंने अपने पूरे फेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया, आप देख सकते हैं। एंड मेकअप करने से पहले अपनी स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारा मेकअप परफेक्ट नजर आए। सो अब सेकंड स्टेप है मेकअप। सो वीडियो स्टार्ट।